इस वीडियो में हम यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बायलेटरल ट्रांसफॉर्म कवर किया था। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म इज अप्लाइड टू द सिग्नल्स दैट आर कॉजल। तो हम इसको कॉजल सिग्नल्स पे ही अप्लाई करते हैं। तो फॉर द सिग्नल्स दैट इज 0 फॉर टाइम t is less than 0। तो अगर हमें किसी xt सिग्नल का यूनिलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम जो कि हम बायलेटरल में लिखते हैं, बट द लिमिट इज गोइंग टू चेंज। लिमिट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। उसमें क्या होता था कि लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के लिए होती थी, बिकॉज जो बायलेटरल लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो नॉन कॉजल सिग्नल्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। नाउ हियर we know that S is equal to sigma plus j omega. Now, it is quite necessary to understand the integrable condition. So, for that we can have S is equal to sigma plus j omega. Now, S is equal to sigma plus j omega को हम इसमें पुट करते हैं, that is xt e raised to the power minus sigma plus j omega, and we can have time here and dt here. तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी को सेपरेट कर लेते हैं, एंड एज पर द फॉर्मूला यू कैन राइट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी डी टी। ब्रैकेट को ओपन करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ बिकॉज ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी मॉड ऑफ दिस, जब कोसाइन साइन की टर्म में इसको लिखेंगे तो वी कैन हैव दैट इज इक्वल टू 1 because it is because it is 1, so the integral convergence is written as, for this equation, that integration from 0 to infinity xt e raised to the power minus sigma t, the mode of this dt is always a finite one. So that is a integrable condition जो कि आपके बायलेटरल में भी लागू होती थी, बट वहां पर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती थी. सेम कंडीशन विल बी एप्लीकेबल हियर. So to understand it more clearly, so let us do one two small examples that find the unilateral Laplace transform of unit impulse signal. So when xt is defined for delta t. So the property of delta t unit impulse signal is that this signal is defined only one when t is equal to 0. Otherwise, the value of the signal when t is not equal to 0 is 0. So that is by definition we know. Now, इसको basis मानते हुए we can write by formula xs, that is equal to integration from 0 to infinity xt and e raised to the power minus st dt. That's how we can write. Now, for that, we can further write it. The value of xt here is delta t. So, we can put the value of xt. Now, for that, by definition, we know that delta t is defined only for t is equal to 0 and the value is 1. So, the integration, the area under the curve, we will find out that is 1. So, that is equal to the Laplace transform of unit impulse signal. So, that's how you can calculate the Laplace transform of, and that is a unilateral Laplace transform. And for next example, we can find out the if xt
is UT. UT means UT stands for unit step signal, and it is a causal signal. By definition, we know that UT is 1 when t is greater than and equal to 0, and UT is 0 when t is less than 0. This is for unit impulse signal. So for that, we can have again the same definition by definition formula, that xs is equal to limit 0 to infinity xt and e raised to the power minus st and dt. So that's how by definition we can write. So for that, we can have that integration from 0 to infinity xt is what? Ut. So that is ut and e raised to the power minus st dt. Now ut is again defined 1 for this range of time 0 to infinity. It means that can uh, be right in this form, because it is already defined for that range. अगर हम यहाँ पे रेंज अलग होती, बाइलेटरल होता, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता, यूटी आने के बाद हम इसकी लिमिट चेंज कर देते, but the limit is synchronized with the ut, so it's fine. So we do the integration here. So integration of this lead to us, that is e raised to the power minus st and multiplied by 1 by s with negative sign. So that is what the integration is, and we have to put the limit 0 to infinity. After putting the limit, the minus 1 comes out there. So that is minus 1 comes out to be there. So it will be 1 by s. So 1 by s is the Laplace transform of xt, or you can write that Laplace transform of ut, because xt is nothing but ut. So that's how you can do the Laplace transform, and with the test signal. So hope you like the channel. Please subscribe it.